Data science and big data are making स्केल नेटवर्क एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस का एप्लीकेशन क्या होता है? Data science and big data are making an undeniable impact on businesses, changing day-to-day operations, financial analytics, and especially interactions with customers. It's clear that businesses can gain enormous value from the insights data science can Data provide, science or big but data, sometimes it's hard to see exactly how. but So let's look at some examples. In this era of big data, almost everyone generates masses of data every day, often without being aware of it. This digital trace reveals the patterns of our online lives. okay. If you have ever searched for or bought a product on a site like Amazon, you will notice that it starts making recommendations रिकमेंडेशन रिलेटेड टू आवर सर्च, अगर हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, अगर कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट है जस्ट लाइक फेसबुक हो गया, अमेजोन हो गया, अगर उस पर हम कोई कुछ भी सर्च करते तो बार बार उसी के जैसा हम पहले सर्च किए तो उसी के को रिलेटेड चीज़ें बार बार रिपीट होने लगेगा। रिकमेंडेशन रिलेटेड टू आवर सर्च के अकॉर्डिंग, जिस जैसा हम सर्च कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वही चीज़ रिलेटेड चीज़ बार बार related to your search. This type of system, known as a recommendation रिकमेंडेशन इंजन, ऐसा सिस्टम को क्या कहते हैं? रिकमेंडेशन इंजन किसे कहते हैं? अगर फ्लिपकार्ट है, कोई भी वेबसाइट, कोई भी सॉफ्टवेयर है या फिर कोई भी ई कॉमर्स साइट है और उस पर हम कोई भी चीज़ टाइपिंग करते, कोई भी चीज़ सर्च करते और सर्च के अकॉर्डिंग जैसा हम फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम सर्च कर रहे उसके अकॉर्डिंग बार बार मुझे वही वैसा ही कोरिलेटेड चीज़ें आ रहा है। दैट मीन्स का मतलब क्या? रिकमेंडेशन इंजन का काम है कि बार बार एक ही तरह का सर्च करना। engine is a common application of data science. डेटा साइंस में ये कॉमन एप्लीकेशन है। रिकमेंडेशन इंजन इज द कॉमन। Companies like Amazon, Netflix, and Spotify use algorithms to make specific recommendations derived from customer preferences कस्टमर का प्रेफरेंस क्या कस्टमर का प्रेफरेंस मतलब कस्टमर जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ट्विटर, गूगल, इस सब पे क्या सर्च कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग, इसके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग वैसा उसके बिहेवियर वो क्या सर्च कर रहा है, दैट मींस बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही, मतलब कि इस सर्च बार में सर्च जो भी चीजें शो ऑफ करेगा। and historical behavior. Personal assistants like Siri on Apple devices use On Apple devices use data science to devise answers to the infinite number of questions end users may ask. Google watches your every move in the world, your online shopping habits, and your social media. Then it analyzes that data to create recommendations for restaurants, bars, shops, and other attractions based on the data collected from your device and your current location. Wearable devices like Fitbits, Apple Watches, and Android watches add information about your activity levels, sleep patterns, and heart rate to the data you generate. Now that we know how consumers generate data, let's take a look at how data science is impacting business. In 2011, McKinsey & Company said that data science was going to become the key basis of competition, supporting new waves of productivity, growth, and innovation. In 2013, UPS announced that it was using data from customers, drivers, and vehicles in a new route guidance system aimed to save time, money, and fuel. Initiatives like this support the statement that data science will fundamentally change the way businesses compete and operate. How does a firm gain a competitive advantage? Let's take Netflix as an example. Netflix collects and analyzes massive amounts of data from millions of users, including which shows people are watching at what time of day, when people pause, rewind, and fast forward, and which shows, directors, and actors they search for. Netflix can be confident that a show will be a hit before filming even begins by analyzing users' preference for certain directors and acting talent, and discovering which combinations people enjoy. Add this to the success of earlier versions of a show, and you have a hit. For example, data means a simple understanding for what you
what you do in our online and Google and in our website. What are you doing in our website? Searching, watching which tabs are you interested in? Contents. Where are you going more times? This is the डेटा साइंस डेटा साइंस वो चीज़ है जो कि तुम गूगल पे क्या सर्च कर रहे हो, गूगल का हिस्ट्री क्या देख रहे हो, नेटफ्लिक्स पे क्या ज़्यादा सर्च कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग डेटा साइंस है कि जो कि उससे रिलेटेड मतलब कि कंटेंट तुम्हें प्रोवाइड करेगा. दैट इज दिस इज वर्किंग फॉर डेटा साइंस आर डूइंग दिस वर्क. अंडरस्टैंड? Netflix knew many of its users had streamed the work of David Fincher. They also knew that films featuring Robin Wright रॉबिन had always राइट्स, done well, and that the British डेविड version of House of फिंचर्स, Cards was very हाउस ऑफ कार्ड, ये successful. सब नेटफ्लिक्स का क्या Netflix knew that पैकेज है? significant numbers of people who liked Fincher also liked फिंचर. Wright. All this information combined to suggest that buying the series would be a good investment for the company. They were right, it was a huge hit. Thanks to data science, Netflix knows what people want before they do. Which of the following application of डेटा का कौन सा एप्लीकेशन है इसमें से कौन सा है जो कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस, इसमें से कौन सा डेटा साइंस का एप्लीकेशन है? तो आर्गुमेंट रिलेटेड ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स कलेक्शन फॉर रिलीफ एड डिटर्मिनेटिंग तीनों होगा भाई मेरे अकॉर्डिंग. तो भाई से तुक्का लग गया होगा. नो आइडिया ब्रो.